हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल में आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। जितना भी मटेरियल इन वीडियोस में प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन एंड नेचर को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। यूटिलिटी, ये क्वेश्चन यूटिलिटी नाम से डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। एज वी नो, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आई ऑफ लॉ। विदाउट स्टडीइंग ज्यूरिस्प्रूडेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ स्टडी लॉ. So, to understand the terms used in law, we need to understand the definitions of those terms. And jurisprudence is the collection of basic general principle of law. Importance of study of jurisprudence are: इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ लॉ, ये हमें लॉ की नॉलेज देता है, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम में ही लिखा हुआ है, ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ लॉ. इट गिव्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ. Yes, it gives the basic principle, like it is the collection of all the definitions used in law. It is helpful for judges during interpretation of law. Sometimes law is not easy to understand, so it is duty of judges to understand and interpret the meaning and definition of the particular law, so there he can do with the help of jurisprudence. After studying the rule of interpretation in jurisprudence, he can define a law in simple terms. Jurisprudence removes the complexities of advocate and lawyers regarding any law. It clarifies what law is and how to apply law. It provides the source of law, as if we don't know about the source of law, how can we apply or relate law? अब हम स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देख लेते हैं। स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कब, क्या और कैसे था, और इसने क्या क्या कंटेन किया हुआ है। स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस changed and developed with time. We can divide the scope of jurisprudence in three ways: early time, Austin period, and modern period. Early period. Early time scope of jurisprudence was very narrow, as jurisprudence gave the study of morality, religion, and customs. Earlier, society gets controlled by morality, religion, and customs, so people avoid to do anything against or not related to their religion. पहले लोगों को डर लगता था, वो अपने रिलीजन से हटके कोई भी काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उसी को ही अपना लॉ मान लेते थे. दे ऑलवेज ट्राई टू नॉट देयर रिलीजन्स, कस्टम्स एंड मोरालिटी विद ऑल द एक्ट्स दे डू पर्सनली एंड सोशियोलॉजिकली. जो भी काम वो पर्सनली करते थे या सोशियोलॉजिकली करते थे, वो रिलीजन, कस्टम एंड मोरालिटी के साथ बंध कर करते थे. एट दैट टाइम देयर वर नॉट एनी रिटन लॉज. Laws are just customs, like if particular thing has done by our ancestors, so we also need to be done. उस टाइम पे कोई रिटर्न लॉज तो होते नहीं थे, यही रहता था कि अगर किसी के एंसेस्टर्स किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बाकी के जो आने वाली पीढ़ियां थी वो भी वही काम उसी मैनर में करती रहती थी, उसको लॉ मानकर. घर का हमारे घर का यही रूल है, इस हिसाब से चलता रहता था. नो पर्सन वांट to act against their moral values, their religion, or want to go beyond their customs. So, in earlier times, scope of jurisprudence turns around the morality, religions, and customs only, as there is nothing written as laws. तो उस टाइम पे जो लॉ था वो मोरालिटी, रिलीजन्स एंड कस्टम्स के ही चारों ओर घूमता रहता था, कुछ भी लिखा हुआ लॉ तो था नहीं. इसीलिए वहां उस टाइम पे जो लॉ का स्कोप था वो बहुत ज्यादा नैरो था. अब नेक्स्ट आता है ऑस्टिन पीरियड. ऑस्टिन पीरियड में ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दी थी. इन दिस एरा ऑस्टिन गिव्स द थ्योरी ऑफ लॉ, दैट इज कमांड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन. लॉ जो है वो कमांड है सोवरेन की. सोवरेन मतलब होता है जो भी सर्वप्रभुता, जो सबसे पावरफुल इंसान होता है वहां पे, वो सोवरेन हो जाता है. उसकी कमांड होती है, वही लॉ बन जाती है. उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो करना पड़ता है. ऑस्टिन डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की. पॉजिटिव लॉ मींस लॉ एज इट इज, मतलब जो है वही है, जो लॉ आपको दिख रहा है वही लॉ है. दैट मींस लॉ दैट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट. Law is command of superiors. In this time, custom gets ignored, judges gets ignored, welfare laws gets ignored, as Austin just focused on positive law. It
It just deals in law that is present in current time, either it is good or bad. वो बस ये देखते थे कि जो भी है वही लॉ है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है. So Austin also congested the scope of jurisprudence at it is the study of positive law. अब हम देख लेते हैं मॉडर्न पीरियड. इन दिस पीरियड ऑफ द स्कोप ऑफ jurisprudence is very large. We can feel very wider scope of jurisprudence in this era. Jurisprudence gives us knowledge of law, gives basic principle of law, gives knowledge of theory of law, gives knowledge of school that defines jurisprudence. In the modern period, jurisprudence is the collection of definition of all the terms used in different kind of laws like possession, ownership, rights, liabilities, etc. It also tells us the source of law, that why nowadays jurisprudence is considered as the eye of law. Without the study of jurisprudence, we cannot study the law. In the modern period, further we can see scope as sources of law, basic concept and school. अब हम देख लेते हैं sources of law. Jurisprudence gives us the knowledge of source of law. That means jurisprudence defines us from where the law comes. It tells how law comes from customs, law comes from traditions, law comes from legislation. Legislation मतलब legislature जो भी laws बनाती है. Law comes from precedents. Precedents वो rules होते हैं, वो judgments होती है जो judges at the time of proceedings दे देते हैं and वो फिर record कर ली जाती है for future cases. These all are the source of law. The customs that were followed by people and are useful for our society becomes law. The tradition that we follow from long time and does not affect any group of people becomes law. Law also comes from parliament that made by legislature. Some judgment given by judges of Supreme Court becomes law for future cases. बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं लॉ में यूज की हुई उन सबका कलेक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही है. तो अब डेफिनेशंस देखते हैं जैसे कि राइट्स. ज्यूरिस्प्रूडेंस गिव्स अस नॉलेज ऑफ व्हाट इज राइट. Although our substantive laws like Contract Act, constitutional law tells us what are our rights, what are our duties, what are fundamental rights, but what is right is a question that is clarified in jurisprudence. Duties. We have some duties imposed on us by IPC, CRPC to protect the rights of another. But what is duty is a question that is clarified in jurisprudence. Ownership. Being a normal citizen, we only know the word ownership. But when any dispute arises regarding ownership of any property, we went to a lawyer who has done the study of law. The study of ownership, kinds, definition of ownership defines in jurisprudence. On the basis we can know our rights of ownership of any property. Next आता है possession. Just similar to ownership, we being a normal citizen does not understand the legal term of possession, meaning of possession, types of possession. So these terms are defined in jurisprudence. Liability. Contract Act gives us right to contract with any other person. But if the person breaches the contract, the breach of contract bound person with a liability to pay the compensation. This word liability, kinds of liability, like civil liability and criminal liabilities, are defined in jurisprudence. Negligence. Negligence is as a basis of legal liability. Negligence means to neglect any part of crime, neglect the duty or carelessness. It is failure to meet a standard of behavior established to protect society against unreasonable risk. So meaning of negligence, kinds and demerits of negligence can find in jurisprudence. Next आता है obligations. Obligations is an act of making oneself responsible for doing something. Here something can be a promise or can be a contract. So we get the information of obligation in jurisprudence. Under jurisprudence, we can study meaning of obligation, different kind of obligations, etc. Obligations has the same protection in call as it is of liability.
नेक्स्ट आते हैं स्कूल्स. Jurisprudence have its own schools like analytical school, historical school, sociological school, philosophical school, realistic school. So by the study of jurisprudence we get the knowledge of schools of thoughts. Jurisprudence tells us what are the thoughts of these schools. Here meaning of school is ideology, philosophy. Let us assume A states law in his language, B states something, C and D also state something about law. So let us assume thought of A, C and D are same regarding law. So they fall in same school, but B's thought regarding law is different. So he will fall in another school. So school can be considered as a group of person or set of person of same kind and thoughts whose beliefs and understanding about law are same. Same philosophers of a particular school try to prove their statement right and try to demolish or prove wrong the statements of other schools. लास्ट में कंक्लूजन आता है. सो दीज आर द स्कोप ऑफ jurisprudence in which jurisprudence is based and defines all the above mentioned point clearly and legally. So we can conclude after studying all the scope that present view of scope of jurisprudence cannot be circumscribed by any particular boundary. It includes all the concept of human order and human conduct in society, and anything that concerns state and society fall under the domain of jurisprudence. तो इसके साथ हमारा स्कोप का टॉपिक भी आज खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और